Hi, good afternoon, everyone. This is Dr. Mamta Jain, and today we welcome you all for a very different kind of initiative which has been started across by Indian Psychiatric Association with none other than Mr. Harbhajan Singh. I hand it over to Dr. Roshan, who is from the Indian Psychiatric Association, to talk about the initiative and take the whole session forward. Dr. Roshan. Yes. Hello, everyone. Heartfelt good morning, good afternoon, rather good afternoonish from my end. I am Dr. Roshan, Associate Professor of Psychiatry at the Central Institute of Psychiatry, Ranchi, a century-old institute, and I'm also a convener for the IPS Sports and Mental Health Task Force. And I welcome everyone for this one of its kind initiative or e-panel discussion that we are having, Dil Se Khelo Aur Jeeto, Importance of Sports and Psychiatry, hosted by Sports and Mental Health Task Force IPS. First, I must extend my heartfelt gratitude to Harbhajan Singh sir, the Turbnator, the one and only, for taking out time to be part of this initiative, this panel discussion, and we welcome you, sir, for that. And I welcome IPS office bearers, and very important part of us. They are our mentors. I must talk about Dr. Vinay Kumar, the president, Dr. Lakshmikant Rati, the vice president, Dr. Arvinda Brahma, the general secretary, Dr. Alim Siddiqui, honorary treasurer of IPS, and today's anchor, and Dr. Om Prakash Singh, the honorary editor of the IPS. I must also take this opportunity to introduce the hard-working people behind this initiative, this e-panel discussion, the IPS Sports and Mental Health Task Force. Our advisor, Dr. Kishore Gujar, chairperson, the all-present, omnipresent Dr. Amrit Pattajoshi, the co-chair, Dr. Chirag Shah, and the EC coordinator, Dr. Ranjan Bhattacharya. And before handing it over to Dr. Alim, who would be the anchoring this ship today, this e-panel discussion today, I must speak few words about Dr. Alim Siddiqui, one of our senior members here, is an IPS treasurer. He is the person who's with money, and he's the person who's looking after everything, the ventures. He has also captained the teams here at we play the IPL, the Indian Psychiatric Society Premier League. Definitely a kind of small initiative that we did after obviously watching IPL for all these years. So he has captained his side, won it twice for his zone. And he has also done well on the badminton court, winning medals at 45 age plus category. And I hope he keeps on playing at much younger age. I mean, he's probably aging like a wine. So enough. I think enough with this discussion. I think we must proceed ahead. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Harbhajan sir. You're looking as young as ever, probably ready to bowl again on this pitch today. Thank you, and I must hand it over to Dr. Ali. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Roshan. Thank you so much. My respect and regard to Mr. Harbhajan Singh. And if we call you by mistake Bhaji in between, please forgive us, because you live in our heart. We are having a moment of our own. So thank you, sir. Yeah. So it is my pleasant duty to introduce Dr. Amrit Pattajoshi. Amrit Pattajoshi is my, you can say, brother. We do all the things together. Sometimes we get caught, sometimes we don't. So Amrit is an avid sports person. He plays himself very well. He's a very good cricketer in our circles. Then he has captained his side for 2 times, winning our psychiatry league. Then as a mental health professional, he's associated with the Junior Hockey India team, with the Odisha Football Club, and many players in Ranji are in contact with him. So he has an all-round performance. He takes everyone along, and it is always a pleasure working with you, Amrit. Amrit, welcome to the show. Then again, my most pleasurable duty is to introduce the guest, Mr. Harbhajan Singh, MP Rajya Sabha, former Indian cricketer. And who does not know about him? He's a world champion, world beater.
he has turned the tables on Australia in 2001 when they were thought invincible. So he has done the invincible thing. He has made us proud. He is one of the gods of the cricket religion that we have. Thank you. So I'm very glad that he accepted this invite. Mr. Harbhajan Singh, very, very warm welcome from all of us, and it is a pleasure having you here. Thank you. Thank you so much. Lovely to be with you all today, and I'm looking forward for this session क्योंकि बहुत कुछ सीखने मिलेगा मुझे, क्योंकि जीवन में आप जब आगे बढ़ते हो तो बहुत लोग मिलते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं और सिखाते हैं, and I'm looking forward for this session and looking forward to know few more things which can make me better as a person. Thank you, sir. Now I invite our president, Dr. Vinay Kumar, sir. So this whole task force is his brainchild. So, sir, I welcome you for your blessings. And why did you make this task force, and how is it functioning now, sir? Your comments. Over to you, Vinay, sir. Good morning, namaste, Sat Shri Akal, Harbhajan bhai. Sat Shri Akal ji. तो उर्दू का एक शेर है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। थोड़ा समझा दूं कि जो हॉर्स राइडर है वही वॉर फील्ड में गिरेगा, तिफल इनसाइड वो बच्चा क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलता है। बिल्कुल। तो लाइफ इज ऑल अबाउट हॉर्स राइडिंग, लाइफ इज ऑल अबाउट माउंटेनियरिंग। कदम कदम पे ऊंचाइयां हैं, कदम कदम पे मुश्किलें हैं, और स्पोर्ट्स का तो जन्म ही हुआ है मुश्किलों से नेगोशिएट करने में। हमने जब बोलना नहीं सीखा था उसके पहले खेलना सीखा था। ये बात सबको जाननी चाहिए। अभी मैं एक शेयर कर रहा हूँ लिटरेचर एंड साइकियाट्री का वेबिनार उस तरफ, वहां से भाग के आया हूँ, तो इसलिए मैं ये कह पा रहा हूँ कि लिटरेचर और लैंग्वेज तो बात की बात है। सबसे पहले हमने खेलना सीखा, और खेलने ने हमें प्लेजर दिया, खेलने ने हमें और क्या दिया, खेलने ने हमें नेगोशिएट करने की कैपेसिटी दी। स्पोर्ट्स इज नॉट अबाउट विनिंग, स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट ट्राइंग टू विन, एंड win is not important at all in sports. It's for pleasure and for momentary gains, but it's all about nobody remembers in the long run who lost and who won. Ultimately, who played well, that is important. तो खेलना जरूरी है। मैच में कौन हारा कौन जीता, जिंदगी में कौन हारा कौन जीता वो इम्पोर्टेंट नहीं है, खेलना जरूरी है। Sports, why I conceptualize this task force? I conceptualize this task force because sport is a mental activity, basically. It's not physical activity only. Para Olympics भी होते हैं। ये मेंटल एक्टिविटी है। हम जो अभी मैच में हारे, थोड़ा पिच और थोड़ा माइंड, पिच ने माइंड को घुमा दिया तो हम हार गए इस बार वर्ल्ड कप में। अदरवाइज ये कंप्लीटली मेंटल गेम था। पोंटिंग टोल्ड, पोंटिंग ने क्या कहा? पोंटिंग ने कहा भाई जैसी सब कॉन्टिनेंट की पिचेज है वैसी ही पिच है, जाओ और प्ले योर ओन गेम, हो जाएगा। और हमारे यहाँ जो पहले हम फंस गए, तो 60% मेंटल गेम है, 40% जितने भी स्पोर्ट्स हैं सब में 40% ही बॉडी प्ले करती है, बाकी माइंड प्ले करता है। आप खेल के मैदान में जाते हो, ये जो इंस्पिरेशन है, इनिशिएटिव, इट्स मेंटल वर्क। बहुत सारे लोग होते हैं जो जाते ही नहीं कहीं पे, तो जो इनिशिएटिव है वो मेंटल है। व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, वहां काम करना शुरू करते हो, तो फर्स्ट यू लूज, यू डोंट प्ले वेल, तो फिर वो माइंड ही है जो आपको सपोर्ट करता है, दैट इंस्पायर्स यू टू प्ले। व्हाट चेंज, आई रिमेंबर युवराज सिंह, ही वाज हैविंग पेन and he won, and he was the series of the man of the series in World Cup which we won. क्या था वो? And then he made a comeback recovery के बाद. Mind, it's not body.
इसीलिए स्पोर्ट्स मेंटल हेल्थ की बात की, बिकॉज वी हैव मेनी थिंग्स टू लर्न फ्रॉम स्पोर्ट्स. वहां पे साइकोलॉजी तो बात की बात है, बिना साइकोलॉजी की थ्योरी के ही सारे स्पोर्ट्स पर्सन साइकोलॉजी पे ही चलते हैं. तो हमें उनसे सीखना है. दैट इज द रीजन हरभजन सिंह जी इज देयर, कि हम उनसे बात करेंगे कि भाई आप अपनी जर्नी में जब गिरते हो तो कैसे उठते हो. और ये लेसन आर इंपॉर्टेंट. दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है, हमने ये सोचा कि स्पोर्ट्स को भी साइकोलॉजी की जरूरत है, बिकॉज लॉट्स ऑफ वीयर्स एंड टीयर्स आर देयर. प्लेइंग 11 में या प्लेइंग 15, बाकी रेस्ट 1000 क्रिकेटर्स, 2000 फुटबॉलर्स, उनका क्या होता है. तो there are lots of years and tears there at mental level as well. So Indian Psychiatric Society being the premier organization in the field of mental health, हमें sports organization के साथ we want to make linkage, and I would like to request Harbhajan Singh कि हमें जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, हमें बोर्ड ऑफ इंडियन क्रिकेट है, उससे हमें हमारी बात करा दें. हमारे लोग आपसे इंटरेक्ट करेंगे और हम एक बना सकते हैं रैपो फुटबॉल एसोसिएशन सबके साथ. हमारे लोग they will go free of cost, उनको कुछ चार्ज नहीं करेंगे, आराम से जाएंगे, बात करेंगे, उनके साथ मोटिवेट करेंगे, अच्छा लगेगा उनको. तो स्पेशलिस्ट के साथ एक लिंकेज बनेगा. तो हम ये ब्रिज बनाने के लिए भी हमने ये बनाया है. And I congratulate the team, young handsome अमृत, कि उसने एवर हैंडसम हरभजन सिंह को इनवाइट किया. और हरभजन सिंह जी हमारे तो लीडर भी हैं आपको, तो लीडर को तो गाइड भी करना है, लाइट भी देना है लाइफ में. So with these few words, I hand over to the organizers. Thank you so much, sir. Thank you so much. We always need your blessings. Our vice president could not be here. He sent a video message. So if the admin can play it now. Good morning from Dr. Lakshmikant Rathi, the President-elect of Indian Psychiatric Society. मुझे आज बहुत खुशी है कि एक यहाँ पर ही वेबिनार यहाँ पर रखा गया है स्पोर्ट्स साइकेट्री के उपलक्ष्य में. मैं उस सभी कमेटी के लोगों को, डॉक्टर किशोर गुर्जर, डॉक्टर अमृत पत्तू जोशी, डॉक्टर चिराग शाह, डॉक्टर रंजन भट्टाचार्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. एंड यू डन ए वंडरफुल जॉब. स्पेशली अलीम सिद्दीकी इज ऑल्सो एज ए मॉडरेटर विद दिस, एंड होल IPS टीम इज ऑल्सो देयर विथ यू. स्पोर्ट्स, और यह सबसे बड़ी खुशी की बात हमारे बीच है कि हमारे देश के एक बहुत ही उम्दा प्लेयर हरभजन सिंह जी आज हमारे बीच हैं, जिनका पूरा देश फैन है. और क्रिकेट और स्पोर्ट्स मेडिसिन या स्पोर्ट्स साइकेट्री का बहुत महत्व है. जब भी बल्लेबाज टीम दबाव में जाती है तो यदि एक साइकेट्रिस्ट उनके साथ हो, यदि एक क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट उनके साथ हो, तो साइकेट्रिस्ट जिस तरह की काउंसलिंग कर सकता है, और स्पेशली कुछ लोगों को, कुछ हमारे कलीग्स को स्पोर्ट्स साइकेट्री में महारत हासिल है, तब ये बहुत काम आता है. चाहे क्रिकेट हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो जिंदगी की. अभी टनल में मजदूर फंसे थे, वहाँ पर जब भी उन्हें एक काउंसलिंग की जाती है प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट द्वारा, तो इसका बहुत बड़ा महत्व है. और जब ये मैचेस होते हैं, वहाँ पर जब स्लोगन्स लगाए जाते हैं कि बोल दे हल्ला, घुमा के बल्ला, तो ये चीज़ें बहुत काम करती है और उस प्रेशर को रिलीज़ करती है. इसमें ऑडियंस का भी बहुत बड़ा हाथ होता है. कभी कभी किसी प्रेशर पर ये दबाव भी बना सकती है, किसी प्लेयर पर दबाव भी बना सकती है. आज अचानक मैं भी आज अहमदाबाद में हूँ. यहाँ पर हमारी कर्नाटक की क्रिकेट प्रीमियर लीग है, जिसका भी आज ऑप्शन है यहाँ पर. और चाहे क्रिकेट हो, चाहे कोई भी खेल हो, यहाँ पर हमारे स्पोर्ट्स साइकेट्री का बहुत महत्व है, बहुत रहेगा. स्पेशली ये सब जो गेम्स हैं, इनमें प्रेशर हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है. और जो खिलाड़ी जिस वक्त उस प्रेशर को हैंडल कर लेता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है. और यह सब हमारी स्पोर्ट्स साइकेट्री डिवीज़न ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम लेके, मुझे ऐसा लगता है कि इसे लोअर लेवल से शुरू किया जाना चाहिए. जो भी हमारे क्रिकेट लीग्स होते हैं, जो गाँव के स्तर पर, शहर के स्तर पर, या बाद में प्रदेश के स्तर पर खेले जाते हैं, वी शुड स्टार्ट फ्रॉम बॉटम, सो दैट दे शुड बी टॉट फ्रॉम द चाइल्डहुड हाउ टू टैकल द प्रेशर in the sports field. And if you are able to do this right from the bottom, then by the time they reach at the top, I am confident that they will be able to handle the pressure very, very efficiently. My best wishes to you for this wonderful initiative. I again congratulate all the chairperson, all the committees involved in this, and we will take it to the greater heights in the incoming years also, when I take over as a president-elect of the IPS, and that is my promise to you, because this is the need of the hour. Thank you very much for inviting me, listening to me. Thank you. Have a nice day. Thanks.
Thank you so much, Rathi sir. Over to Dr. Arvinda Brahma, our secretary. Secretary sir, please unmute. So first of all, I must welcome Mr. Harbhajan Singh for joining in today's show. Thank you. I am basically from Calcutta, and I am the contemporary of your captain, sort of. At that time when we are studying in medical college, he was studying in St. Xavier. So in many times we interacted in different programs, and I found the positivity, and I think he will also acknowledge the way he has spread these positive vibes in Indian cricket, like to you and this and the other members like Sehwag or the other Indian cricketers, the young Indian cricketers, the way, and I am really fortunate that that very show in Eden Gardens in 2001 against Australia, the way you people have performed. I am really lucky that because I was there throughout the 5 days, and I have also witnessed many other matches in Eden Gardens. Well, I saw you because our childhood heroes was Gavaskar and Kapil and Viswanath at that time. But in our college days, I found a totally different Indian team. The body language is totally different. So I think that gives the importance of this liaison between sports and psychiatry, because in our day-to-day practice, many patients comes to us with severe depression or lack of motivation, and in many occasions we give example of you people only, from the people who are in sports, in different sports, whether it is cricket or football or hockey, and that inspires people. So what our president or vice president is telling, this liaison between sports and psychiatry is very important. And I believe already our cricket, football, hockey team, we are having this psychology persons as counselors in their team, because time to time it requires. So it will be a wonderful initiative if you can take this message to BCCI, and if we can associate ourselves. Because Indian Psychiatric Society, you will be proud to know that Indian Psychiatric Society is now observing our 75th year. And it is the second largest association of mental health professionals in the world, just after American Psychiatric Association. So if you see the world scenario, Indian Psychiatric Society is having a very important position worldwide. So we are really happy to associate ourselves with all kinds of sports. And once again, I am thanking you for joining this show, and I hope we'll have a very fruitful discussion, very encouraging discussion today. Thank you once again. Thank you, sir. OP sir, your brief comments, and then we go to the main program. First of all, again, I welcome Mr. Harbhajan Singh. You have been kind enough to join us. Thank And you. this has been possible. I must say that we have to say that this has been possible due to Dr. Amrit Pattajoshi, Dr. Aleem, Dr. Roshan, and other members of the committee. The sports psychiatry has been introduced, and I think that we will take it forward. And lot of sports gives lot of kind of lessons. One time you are high, second time you are low, and you have to handle pressure. And that is the thing people can learn from you, how you handle this pressure. And also as a professional, how we can be associated with you people and help you. So I will not take much time. My thanks to all of them. And again, I thank Aleem and Amrit for organizing this wonderful webinar and inviting you, and you for coming. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, OP sir. Amrit, now it is over to you. Please interact with our guest, Mr. Harbhajan Singh. Sir, over to you. Thank you so much. Thank you so much. First of all, let me welcome Harbhajan Singh sir. Sir, namaskar. So we'll try to stick to thoda English because a lot of people throughout the country have joined and many are little, but we can make it English. And it's not examination, so you can pass any question that you are not comfortable with, because you are in a position, you are in a post, you need not answer all the questions we will be asking, sir. So first of all, sir, our president was talking about the India Australia final, and we are still not out of the shock. We are still reeling from it. Some of us need psychological help.
Did you ever feel that India lost it in the mind? Let us forget it, the pitch. Dekho, everything is in the mind, as rightly mentioned. Some of the senior doctors here who spoke earlier, everything starts from mind. You win or lose, everything comes into your mind first, and then your body absorbs it, and then your body function like that. And I believe that more than anything, I think it was that big game pressure which caused the game. Nothing else. If it was any other game, I think India would have done much better than what they have performed on the final day. And on the other side, Australia, they were at their best, and they played absolutely brilliant cricket, and they kind of played a similar kind of a cricket what India played in previous 10 games. So where India lacked in the final day, it was all due to, I believe, that pressure in those situations where you feel, यार आज हार गए तो क्या होगा यार, वो अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा. वो रिजल्ट के ऊपर ज्यादा प्रोसेस जो है वो ड्रिवन हो गया रिजल्ट के ऊपर, rather than फोकस करना चाहिए था वो काम पे. सो वो हो जाता है. इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट पीपल who can put their mind there and then and deliver at that time, they go on to win a cup, or they go on to win a championships. So that's where is the difference. It's all in the mind, how you take any challenge in life to go forward, whether it's a cricket match or even otherwise, in our normal life. It's our mind. कोई भी मुश्किल आती है तो हम पहले दो तरीके के ख्याल आते हैं. यार ये होगा, कोई बंदे कहते हैं ये कर दूंगा, कुछ कहते हैं यार ये कहाँ मुश्किल में फंस गया. तो फर्क वही रहता है, जो सोचता है कि मैं कर सकता हूँ और मैं कर दूंगा, वो निकल जाता है उस मुश्किल से. और जो कहता है कि यार ये क्यों आ गई मेरे लिए मुसीबत, वो उसी में फंसा रह जाता है, और फिर एक एक करके और मुसीबतें साथ में चलती है. सो या, लॉट टू डू विद द माइंड. आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, दे वर in better frame of mind the other day, and they came out as a champion. And people will remember a champion forever. Would a psychiatrist have done a good job if it was attached to that team? Somebody in Ahmedabad, we had a lot of psychiatrists in Ahmedabad. I mean, see, I'll tell you, it does help, when you have people from different field talking to different people. Do you guys bring different aspect all together? Sometimes we are in our own zone where we believe that everyone is watching you, and everyone want you to do well and perform and win the cup. And when people like you or psychiatrists come from different zone, they doesn't have to talk necessarily about cricket or about their game. You guys have so much of experience talking about different aspects of life, or different kind of things which obviously can take the pressure away from the player. And it is just the वो reference point जो आप जो है वो देंगे कि ये प्रेशर यहाँ भी था वहां भी था, कहानी बतानी है, उसको रिलेट जो है वो प्लेयर अपने आप कर लेता है. So yeah, it does help, when you have professional people around you. Yeah, not necessarily telling you कि ये करना है या वो करना है, but giving you that comfort or that feel कि हाँ यार, जब घबरा रहा होता है ना बंदा, तो कोई ना कोई साथ में चाहिए होता है, तो उसको लगना चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूँ मैदान में. So yeah, it does help. And I must tell you that in 2011 we had this guy Paddy Upton from South Africa. He was pretty good. Gary Christian kept him in the team. He was more of a mental coach than any other coach. He used to work with us, talk to us whenever required. He doesn't needed to necessarily talk every day, but whenever he felt somebody is going through some emotions, say someone is having a bad day or someone is not in a good mood,
that's how you play. जो घर से अपना मूड लेके आते हो, होटल से लेके आते हो, वही कभी कभार आप ग्राउंड में भी आपकी वो जो पर्सनैलिटी पे या फिर उस पे रिफ्लेक्ट करता है आपकी गेम पे. सो पैडी ऑप्टन का मेन काम था वो यही था, टू ऑब्जर्व पीपल हाउ दे आर बिहेविंग एंड उसके अकॉर्डिंगली ही वुड टॉक टू डिफरेंट पीपल, बट जस्ट थोड़ा टच करके निकल जाता था. सो इट मेड द डिफरेंस. You are the only bowler in the world I know who gets angry when he used to take a wicket. My question is, how have your early experience in life made you, shaped your mental approach to the game? Just comment, sir. मैं पहले तो उस पे आता हूँ जो आप कहते हैं, आई एम द ओनली बॉलर हु गेट एंग्री. आई वाजंट गेटिंग एंग्री, इट इज दैट वो जो अंदर उबाल है ना, वो निकलता है बाहर, और कुछ नहीं होता. क्योंकि जो बहुत सारी इमोशंस जो छुपी होती हैं, वो जो आप का डर है या फिर आपका जो अंदर खुशी है, वो सब बाहर निकलता है. व्हेन यू परफॉर्म, व्हेन यू विन, व्हेन यू डू समथिंग स्पेशल, तो वो बाहर आता है. वो एंग्री नहीं है, वो शायद आपको वैसा नजर आएगा. और जो आदमी ग्राउंड पे, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी कहा, ग्राउंड पे जाओ, खेलो, बट जीत के लिए खेलो. वहां पे ग्राउंड में आप सिर्फ इस तरीके से नहीं जा सकते कि ग्राउंड जाएंगे, खेलेंगे, आ जाएंगे. यस, वो नॉर्मल लाइफ में ठीक है, बट व्हेन यू प्ले एज ए प्रोफेशनल, यू वांट टू विन एवरीथिंग, एंड दोज मोमेंट यू वांट टू विन, एंड व्हेन यू कंट्रीब्यूट टू टीम सक्सेस बाय टेकिंग अ विकेट और स्कोरिंग रन्स, वो ऑटोमेटिकली वो जो उबाल है अंदर, वो बाहर आता है. दैट इज नॉट फ्रस्ट्रेशन, दैट इज द हैप्पीनेस, दैट्स अ रोर जो किसी भी एक वो अचीवर के चेहरे पे होनी चाहिए, वो होती है. बाकी आपका क्वेश्चन जो था मैं भूल गया हूँ, मुझे एक बार बताइए दोबारा. क्या बेसिकली योर एक्सप्रेशन ऑफ योर इमोशंस, मतलब वो आपका अर्ली चाइल्डहुड से लेके, मतलब हाउ डिड इट शेप योर मेंटल हेल्थ इन क्रिकेट, योर अर्ली एक्सपीरियंसेस? सी, I'll tell you, मेंटल हेल्थ मुझे इसके बारे में ज्यादा अभी तक भी नहीं पता है, टू बी ऑनेस्ट, क्या होती है मेंटल हेल्थ. बट ऑफ कोर्स जिसकी सही होती है वो जीवन में बहुत आगे निकलता है. आई कम फ्रॉम जलंधर, वेयर आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, जस्ट बाय लुकिंग एट माय हीरोज, कपिल पाजी या फिर विव रिचर्ड्स, या जो कहानियां सुनी, देखी कि एक दिन ऐसा बनना है. तो क्रिकेट खेलना मेरे लिए एक चीज थी, पर मेरे लिए इंडिया के लिए खेलना वो सबसे बड़ी चीज थी. मैं शायद वही चीज को लेके जीवन में आगे बढ़ा था कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है. सपने बड़े थे, और वही है कि अपने आप को अगर रेडी करते हो, अपने आप को पहले यहाँ बताना पड़ता है दैट मेंटली आई एम रेडी, दैट व्हाटएवर इट मे टेक, दैट नोबडी विल बी एबल टू स्टॉप मी फ्रॉम प्लेइंग फॉर इंडिया. तो मेरा मानना वो था, मेरे अंदर की आवाज वो थी. So I think that's where I succeeded, and maybe there were more talented guy playing, around me, with me, but वो उन्होंने सोचा नहीं कि मैं यहाँ पहुंच सकता हूँ. So वो फर्क वही रह गया कि what you think here, your body start, performing the way you are thinking. So that's how it started, and that's how that mental kind of thing which helped me growing in life. So when you were playing, and Australian cricketers are known as bowling, they were, sledging, and you were one of the few cricketers who looked them into their eyes. So how did you manage the pressure of international cricket? There are only 3 or 4 players who were good enough. Managing a team, that was tough. How did you manage the stress of international cricket? See, as I earlier said, कि sports is all about winning. ठीक है, participate करना है, but you cannot be participating every time and not winning. So to win, you have to obviously, fight till the end. And I come from Punjab, and मुझे इस बात में बड़ा फक्र महसूस होता है कहते हुए कि यहाँ से जो शूरवीर हुए हैं ना, तो उन्होंने एक ही चीज सबसे बड़ी जो छोड़ के गए हैं कि उन्होंने लड़ना सिखाया है. तो वो ब्लड में ही था कि हार नहीं माननी है, लड़ना है. और जब मैं मैदान में उतर जाता हूँ या उतरता था, तो मेरे लिए स्टीव वॉग या बाकी के भी जितने सामने वो ऑस्ट्रेलियंस या व्हाटएवर, हूएवर यू नेम, वो एक बराबर के थे हम.
So it was, जो game was more to do with the skills rather than, मुझे लगता है कि वो जो स्लेजिंग वगैरह की, अगर स्किल में आप उनको बीट कर सकते हो और मेंटली you have to be very, very strong. You have to tell yourself that no matter what happens, then मैं जब तक हूँ भारत तब तक हारेगा नहीं, और जब मैं गिरूंगा तब भारत ये मैच हार सकता है. तो वो ना गिरने की जो है ना जिद, वो आपको विजेता बनाती है. So that's what worked for me, and I never actually felt any kind of a pressure from the opposition कि मुझे उनसे घबराहट हुई है. नहीं, मैं कोशिश यही करता था कि मैं अपने जोनर में रहूं, मैं अपने आप को मेंटली इतना फोकस रखूं कि दैट ये बाकी की चीजों के चलते हुए जो मेरा मेन फोकस है बॉलिंग है, मैं उसको ना भूल जाऊं. सो नो मैटर व्हाट दे वर सेइंग टॉकिंग, बट जवाब तो देना है और साथ ही साथ वो फोकस करना है कि बॉल जो करने आती है ना मुझे वो करनी है. So normally what happens in what is pressure? In pressure situation, what all we do is we do different things than what we know. So sometimes we practice something for many years, and then when that situation come to perform, we kind of get tight, numb, वो sound of people, then we feel कि नहीं यार ये नहीं, ये कर देता हूँ मैं जो जल्दी वाला option. So I always believe that over the years, it took a lot of time for me to realize that take a little bit more time when you're in pressure situations, and do what you know the best. And you have practiced that for 10 years, 15 years. You'll not go wrong in that. But जो चीज नहीं आती है ना, कभी कभार हम वो कर जाते हैं जल्दबाजी में. So वो नहीं करनी है. It's a wonderful observation, because in the 2003 World Cup final, we tried too hard, I think. Of course, that was the final. That's a final we lost because we tried too hard. We did not stick to what we were best at, and that still haunts us. Harbhajan Singh, one episode I want, because we can all talk about highs in our life, but we generally don't talk of lows in our life. And when we asked a lot of people what questions we should ask to Paji. So people told me, please ask him about the Monkey Gate episode. How did you tackle with it? It was so tough. The whole world was focused on only one thing, because they wanted to show us in the poor light, you, Sachin, by everything. So how did you manage that? What was the pressure, and how did you manage that? Yeah, I believe that was a very, very tough time. I felt that I was on my own. I didn't have much support in terms of while I was there on the field. But obviously you have to keep yourself motivated, and it was not that easy. When the whole crowd was going against you, wherever I was moving out, whether it was for a meal or something, that everywhere camera was following me as if I've done some crime. But it was a tough time. But I'm, I must say that talk to people when you're in those situations. It helps, क्योंकि बहुत बार होता है हम बात नहीं करते हैं, अपने आप में ही रखते हैं कि यार ये जो हुआ गलत हुआ. नहीं, जो हुआ वो ठीक ही हुआ यार, कुछ नहीं हुआ. क्योंकि क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा. सिर्फ ये समय है, ये निकल जाएगा. ये समय को कैसे निकालना है वो आपको आना चाहिए. और मैं उतना, मुझे ये मेंटल हेल्थ का पता नहीं था क्या होता है और कैसे ये आपको इफेक्ट कर सकती है. जब मैं भी कमरे में बैठता था, इट यूज्ड टू मतलब बॉदर मी कि यार क्यों हो रहा है यार. आई एम हियर टू प्ले क्रिकेट, एंड व्हाई ऑल दिस नॉनसेंस इज हैपनिंग अराउंड मी. Whenever I'm moving out, people are saying things to me, and when I'm on the field, then people are booing me and stuff. So it kind of hit me also. But luckily I had few people I can talk to them. I can freshen up my mind talking to them. Or then मेरे ख्याल से वो it helps when you talk to people. And then obviously समय निकल जाता है. ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है. अपने आप को एक स्ट्रेस आता है एक किसी भी चीज का, वो आप उसको इतना बड़ा ना कर लीजिए. So don't carry too much of a luggage with you, wherever you go.
in terms of ये लगेज इसमें ही रहता है हमारे यहाँ से इतने भारी हो जाते हैं तो हम ठीक डिसीजन नहीं ले पाते हैं लाइफ में कभी कभार तो एक्स्ट्रा किसी भी छोटी चीज को बड़ी नहीं करना है दिमाग में सोच सोच के जो हो रहा है ठीक हो रहा है मैं तो वो सोचता हूँ Sir, only one thing I would like to tell you: everybody is not a Harbhajan Singh. Everybody is not from Jalandhar. Sir. A lot of people from the smaller towns forget Dhoni. He is out of this world. So who are not they have lower self-esteem. So we see a lot of people. I saw a cricketer that day who committed suicide because she was not selected. Just as sir बोल रहे थे 3,000 for every one cricketer who plays internationally. There are another 5 crore people who have not played. So the probabilities are very, very less. And if each level, if you see the rejection rate is very, very high. So that is one method, but that should be a mechanism. So आपको कभी लगा कि आपके साथ एक साइकियाट्रिस्ट होता कि आप जैसे बोल रहे हैं आप बाहर जाते हैं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा था, यू फील पीपल, आपको कोई बोल भी नहीं रहा था, लग रहा था कि लोग मुझे देख रहे हैं क्या, लोग मुझे कुछ बोल रहे हैं क्या, लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं क्या, यू आर नॉट एबल टू स्लीप, आप रूम में आते हैं तो वही चीज बार बार जो टॉप मिला है, कभी कभी हर समय हर चीज जैसे बोले कोई छोटा चीज को बड़ा सोचना नहीं चाहिए, पर ऐसा हो नहीं पाता बिकॉज द ब्रेन समटाइम्स इज नॉट वायर्ड लाइक दैट। बहुत लोगों को छोटा चीज बड़ा लगता है, वही चीज बार बार आता है, और वहां स्पोर्ट्स साइकियाट्रिस्ट का रोल है। Because I work with a professional football team where I get players and I have treated them with medication, where the coach or international coaches. I work with a coach who has been assistant coach to Barcelona, FC Barcelona. They've told me, yes, doctor, we need our players to be at our best. Of course. कभी so this is the stigma. So बात करने से देखिए, you are all professional players. You know how to talk. You have the best people to talk to. But many times what happens is we know people aren't able to sleep or कुछ भी है. Medicines when required are also important, and the role of psychiatrist comes when they give the whole approach. They give the whole approach. They're not just one aspect. आप देखेंगे साइकोलॉजिस्ट लोग बात करते हैं तो उनको बोलते हैं टीम बॉन्डिंग कर लेंगे, आप लिखा पढ़ा करो, ये करो. Sometimes it does not help because you are beyond those things. आप यदि इतना चर्निंग बर्निंग में पहुंचे हैं वहां, आपका मेंटल लेवल उतना है नहीं तो पहुंच नहीं पाएंगे. It's not just the physicality. So I think that's where we come into play, where we give the whole thing. We give whatever is required. And that's where we want to actually come in. Not as sports psychologists, not as people who just talk to a budgie, sir. I cannot talk to you, sir. You will talk to me 10 times better than what I can talk to you. There are moments when you might need me, but most of the times you are at your level. So coming to the next question, like have you ever felt like when you were retiring, the transition phases, did you go through lows? Because we see people who are just about to retire, they go through lows. What will happen? Will people look at me? Will people see me? Will I be noticed? Will I be able to earn as much as I earn? You think those are the moments where you feel that something is needed in terms of mental health awareness, the impact of people like us? See, in my case, I didn't feel that, I needed anyone around me at that point of a time. I was pretty happy, pretty content in my life. I knew what I was going to do. Of course, there have been a lot of lows, a lot of highs while my playing days. But wo lows mein, it is important to have, as you rightly said, to have people around you whom you can trust and talk. And that's where professional people like you, play a big role, not just in sport, but even otherwise, as you rightly mentioned, कि कितने डिवोर्स केसेस हो रहे हैं क्योंकि एक दूसरे की सहन शक्ति जो है हमारी खत्म हो रही है एक दूसरे को सुनने की. और लॉट ऑफ पीपल फील कि यार व्हाई गो टू द साइकियाट्रिस्ट, हम पागल थोड़ी हैं. बट वो आप पागल नहीं हो, बट इट इज दैट मोमेंट व्हेन यू आर थिंकिंग रॉन्ग, मे बी दैट other person can give you a different perspective of life or a different idea कि ये जो हो रहा है ये सही नहीं है. मतलब उसको निशाना ना रखते हो कि यार ये जो आप करना चाह रहे हो ये उसके ऊपर फोकस ना करते हो, कुछ और पर्सपेक्टिव से अगर वो उसको समझाते हैं आप जैसे लोग प्रोफेशनल्स, सो इट डज हेल्प. बट इन माय केस, well, while I was retiring, I wasn't at my low. I was pretty happy, pretty content with my life. Another one important aspect we need to discuss is social media activity. We had one of our top players not playing a World Cup because he gave a comment on a TV show. That was so bad for Indian cricket. Actually, it was just a casual thing. We are all casual. It's not that you tell something you mean it, but a small statement on social media, just a like on something banter, leads to a lot of backlash.
how do you think social media is playing an impact on mental health of sportsmen? I think that's a very important aspect, because I think we lost a World Cup because of this. A statement from somebody on a meet show, you know that, and you have been facing it now for the last 2-3 days. A joke is taken out of proportion. You know, we all face it. It's okay. You don't think too much of what people are saying. It's your life. You live the way you want to live. It is obviously as simple as that. You know, just keep it to that. And social media, use it for fun, not for to get too serious about it. Of course, use it wisely if you want to put across a message or you want to say something. But anything you said, you'll get to kind of people reacting to your tweet or to your Instagram post or whatever you say, maybe on air. You know, कुछ उसमें से पॉजिटिव निकालेंगे, कुछ उसमें से मौका ढूंढेंगे कि कुछ गलती करी है ना? तो आप सबको तो प्लीज नहीं कर सकते हो. आप पहले अपने आप को प्लीज कर लो. Are you pleasing yourself? Are you keeping yourself happy? Are you happy with yourself? If you are, then that's all it matters, I believe. You know, not reacting to what people are saying, because वो तो लोग हैं, वो तो आज भी बोलेंगे, कल भी बोलेंगे. आप कुछ और उसके बारे में बोलोगे, जैसे आपने बात करी है, तो लोग उसमें भी बात निकालेंगे. सो एक वो गाना कितना अच्छा था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है, तो वो चलता रहेगा, है ना? वो सबका एक ओपिनियन है. आप अपना काम करिए, बाकी वो अपना काम कर रहे हैं. जो आपको आता है वो आप करिए, जो उनको आता है वो करेंगे. सो बट इसने सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ जो है वो खराब करी है. ये फोन, जो एक ऐसी टेक्निक, जो ऐसी चीज आई है, हम इतना कुछ हमारे अंदर काबिलियत है, बट ये फोन ने वो बहुत सारी काबिलियतें हैं ना छुपा दी हैं, क्योंकि हम सारा टाइम इस पे स्पेंड करते हैं. तो not just social media, even phone we should use wisely. कब करना है, कब नहीं करना है, we should know. Important message. आप करिए, don't look at likes, don't look at comments, don't look at this. You be positive, be good. Don't use inappropriate social media. That says very good message. Why see that? अगर आपको पता है वहां पे ये हो रहा है, तो why go that way? You know, आप कहीं देखो, सड़क से निकलते हो तो आपको पता है उस तरफ ट्रैफिक है और इस तरफ से थोड़ा स्मूथ है, पर चाहे धीरे चल रहा है. Where would you go? You'll not get stuck in traffic, ना? Why are you going that side? Why do you press that button where you feel कि यार नीचे बहुत गालियां लिखी होंगी कमेंट्स में? Why do you want to go there? Great. Bhajbhai, it's very, we talk about lows in life, people, how they manage their life. But another important aspect is how you manage your highs in life is very important. आप जीत गए हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, कैसे बिहेव करते हैं, पैसा कैसे यूज करते हैं. You know, that's a very important aspect people need to learn. क्योंकि फिर गिरते हैं लोग. No, I think it's very important to be humble in life, no matter what. जो जीत आपकी हुई है मैदान में या अदरवाइज कुछ भी आपने अचीव किया है, सो अगर वो आप जीत को हजम करना नहीं सीखते हो ना, तो देन आपकी जीत जो है बड़ी जल्दी फेड हो जाती है. वो जीत को हजम करना आना चाहिए. और या कुछ भी, अगर आपकी बड़ी कोई कमाई हुई है तो उसको हजम करना भी आना चाहिए, नहीं तो बड़ी सारी जो कमाइयां हैं वो खत्म हो जाती हैं. नाम रुतबा ये जो है वो सब खत्म हो जाता है अगर आपको वो हजम करना नहीं है. तो आई बिलीव दैट स्टेइंग हम्बल इज प्रॉब्ली द वर्ड. कि जब आप जीतते हो, आप सिर्फ ये सोचो कि भगवान ने आपको चुना है, ये कोई और भी हो सकता था, है ना? और अगर उसकी मर्जी है तो आप यहाँ पे हो, या आपको जो मिल रहा है, तो अगर आपको लगता है आप कर रहे हो तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देयर इज समवन हु इज यू नो, जिसके चलते ये पूरी सृष्टि चल रही है. दैट्स व्हाट आई बिलीव इन. और जिसको देना आता है उसको छीनना भी आता है. तो स्टे हम्बल एंड बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव गॉट, एंड ग्राउंडेड रह के चले. तो मुझे ऐसा लगता है, एंड दैट्स व्हाट आई लुक टू डू. एंड यस, एंजॉय योर सक्सेस, यू नो, फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ एंड सेलिब्रेट योर सक्सेस, बट उसको कभी भी दिमाग पे नहीं चलने देना चाहिए. Great. और एक चीज I want to ask you, Bhaji bhai, with success comes money. With money comes a lot of things which you don't want in life. आप अपने कैरियर में बहुत क्रिकेटर्स लोग के साथ इंटरेक्ट किए होंगे, इंटरनेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे. आपको कभी लगा है, इन हाइंडसाइट आप यदि सोचेंगे आपका 30 साल पहले, इफ यू गो बैक 30 years and then carry forward it, कि you have lost certain people for addiction, नशा, वो दारू हो, वो
ब्राउन शुगर हो, वो वीड हो, who would have had a better career? You have seen people जिनको नींद नहीं हो रहा है, आज हाइंडसाइट में आपको लगता है कि maybe a psychiatrist would have done a role. Have you come across Oh cricketers? yes, of course, of course. There are a lot of cricketers I know, a lot of sportsmen I know that they were far more talented than many of us who played the game or have done well in our careers. You know, they chose those wrong habits. जिसके चलते उनका करियर जो है वो खराब हो गया. ऑफ कोर्स उनके पास कोई होता जो समझाने वाला, वो जरूरी नहीं है कि वो घर का ही आदमी चाहिए. कभी कभार घर के आदमी को ना आप उस तरीके से सुनते नहीं हो, और जब आपके पास स्पेशलिस्ट हो, उनके पास जाना या उनकी बात सुनना, इट मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस. एंड आई विश कि उनको सही समय पे आप जैसे लोग मिले होते, डॉक्टर्स मिले होते, या वो गए होते. वो ईगो को साइड रखना बहुत जरूरी है. कभी कभार हमें लगता है नहीं, आई नो एवरीथिंग, ये क्या मुझे समझाएंगे, एक साइकियाट्रिस्ट क्या मुझे समझाएगा, क्या बातें करेगा जो मुझे नहीं. बट वो कभी कभार उस चीज को, ईगो को साइड रख के वो चीज दूसरे आदमी का प्रोस्पेक्टिव सुनना चाहिए. उसको आपके जीवन में कोई वो नहीं है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, वो ही इज ऑलरेडी देयर टू मेक योर लाइफ बेटर. सो अगर उस तरीके से हेल्प मिली होती, बहुत सारे करियर बच जाते. बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत लंबे समय तक खेल सकते थे, और वो जो है वो अब खेल नहीं रहे हैं. उन्होंने अपना करियर तबाह कर लिया. करियर छोड़िए, लाइफ तबाह कर ली. लाइफ. पाजी भाई, that's what we want to tell you is that addiction एक डिसऑर्डर है. वो सिर्फ बात करने से ठीक नहीं होता है, उसके लिए ट्रीटमेंट चाहिए. आपको कभी लगा है कि there's a lot of stigma attached to mental health in sports, और आपके जरिए इफ यू कैन जस्ट प्रोपोगेट इट, आप भी 10 आदमी को मिलते हैं, यदि पॉजिटिव बात कर सकते हैं, वो 10 आदमी और 10 आदमी से बात करते हैं. वी वांट ए पॉजिटिव एनवायरनमेंट वेयर पीपल जिनको नीड है वो वापस मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं, एंड दे रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल. दैट्स द होल एंडियोर ऑफ द स्पोर्ट्स साइकियाट्रिक ग्रुप. सपोज किसी को मेंटल इलनेस है, हाउ इज इट इजी है उनको पहुंचना एक डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास? इज इट इजी, इज इट वेरी टफ? It is very easy, but at the same time, it's very tough. You know, as I mentioned in my previous answer, that जो आपकी ईगो है ना, वो कहती नहीं, उनको क्या ज्यादा पता है. कभी कभार हम उसमें अपने रहते हैं, नहीं आई नो जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ. वो पहुंचना बहुत आसान है, बट उतना ही ज्यादा मुश्किल है. जितना हम सोचते हैं ना कि आसान है, उतना ही मुश्किल है. कि बहुत बार यही चलता रहता दिमाग में, यार नहीं मैं तो ठीक हूँ. वही जो ईगो को साइड में रख के अगर चलेंगे तो किसी भी की हेल्प लेने से आप बेटर हो सकते हो, तो वो लेनी चाहिए. एंड ऑफ कोर्स एज यू सेड, यू नो, दैट्स अ प्रोसेस. आप उसको मेडिसिन से करते हो या फिर उसको किस लिहाज से ठीक करते हो, दैट आई डोंट नो एज यू आर एक्सपर्ट. बट ऑफ कोर्स भगवान ना करे कि मुझे जरूरत पड़े, कि कभी ऐसा लगे कि मुझे आना पड़े. But of course, if I have to, then I must come to you, keeping my ego aside that I'm an achiever, I've done this and done that. But anytime in my life, you know, anybody can go down in their life, and of course, when they need help, they should visit to a doctor or a person that who can heal them, who can make them better person. और एक चीज मैं पूछना चाहता था कि आप कोई क्रिकेटर जानते हैं या स्पोर्ट्समैन जानते हैं who are under medications from psychiatrist? You don't have to take a name. You just have to tell us, do you know anybody who takes medications? Yeah, I know a few of them, but I will not name. No, we don't want names, sir. There are a lot of people. I played a lot of county cricket, especially in England. वहाँ पे बहुत लोग मैं जानता हूँ जो उस तरीके से अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे. And I've been involved in international cricket for 19 years, and I have come across a few people who were under some medication to get better. So you feel that medication made them work better, perform better, or you felt that they put them down? No, I don't think कि जो मेडिकेशन है, मेडिकेशन ने उनका कुछ खराब किया होगा. मेडिकेशन अगर उसके चीज के लिए मतलब दी गई है, अगर उसने प्रोवाइडिंग उसको अच्छे से लिया, तो इट मस्ट हैव वर्क फॉर देम. बट मैं
उतना उनके बारे में कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि it was them who were living that situation or living that moment or a stage of their life. So how they handle that, only they know. But they were fine. When they played on the field, they were fine, absolutely fine. Yeah. They had their moments, but they were fine. They're as normal as you and me, if I call myself normal. No, we are not normal. We are human being, and human being have a lot of complications. बहुत सी चीजें जो दिमाग में चलती रहती हैं unnecessarily. So we are not normal. जो normal बंदा होता है वो उसके होना नहीं चाहिए. इतनी सारी चीजें दिमाग में नहीं घूमनी चाहिए. Normal is a boring concept, sir. One of the best things about you is not just a superstar in the field. You are also a superstar in the political field, and you are a member of parliament also. And that carries a lot of responsibilities. And I should congratulate you that you have been superb. But as an MP, we would always also request you to propagate a little bit of mental health when it comes to policies also. So we would sometimes need your help in certain things when it comes to mental health. It's for the common man. It's not for us in a personal way. So how we handled both the caps, as a cricketer, as a mentor, as a commentator, as a politician? Because as a commentator, you need to speak right. Sometimes you have to be critical. You need, and in a politicians, you need to take care of you don't speak something out of hand. And the political field is not it's not a very easy game nowadays. So how do you manage both the things? Well, it is tough. It is tough to concentrate on a lot of things, but I try to keep it as simple as I can and try to focus on that particular thing, what I'm about to start or doing. If I may say that I have a commentary today, so I'll just focus on that. And if I have a parliament session today, I'll just focus on that rather than thinking, 4 different things at the same time. So I believe that that is something which worked for me. Staying in the present situation, उसके ऊपर focus करना rather than 2, 4, 5 चीजें और जो है वो दिमाग में लेके चलना और उसके बारे में सोचना. While I'm talking to you, if I'm thinking about something else as well, I might not be able to, give you the answer. तो वही same चीज आ जाती है घूम फिर के कि एक टाइम पे एक चीज करिए जो आपको उस समय सही करनी है. तो अगर वो ऐसे सिंपल कर लेंगे तो शायद it may work, and that's what I look to do. Yes, thank you. Baji bhai, I'm getting you into a controversy now. If you don't mind, if you can answer, do you regret slapping? First of all, I think I have said, I have mentioned on many platforms that that was one mistake which I made on in my career, which I'm ashamed of, and I shouldn't have done that. What has happened there and then, क्योंकि जो भी हुआ वो गलत हुआ. And वो किस तरीके के जोनर में था मैं मेंटली, वो yes उस तरीके से मैं पेश आया, वो मैं अभी भी पीछे मुड़ के देखता हूँ तो आई रिग्रेट कि नहीं यार, ये मूवमेंट नहीं होनी चाहिए. ये एक ऐसी चीज जो मैं डिलीट करना चाहता हूँ. अगर मेरा ऑप्शन मिले कि एक चीज अगर आपको डिलीट करनी है मेरे करियर से, तो मैं वो इंसिडेंट डिलीट करना चाहूंगा. बट सी वी आर ह्यूमन, वी मेक मिस्टेक, वी लर्न. Yes. And if you don't learn, you don't move forward. And if you don't make mistakes, you're still not moving forward. So keep making mistakes, keep learning, and keep moving forward. But don't repeat the same mistake again. Simple as that. This is why I asked you the question. The way you have moved around, the way you have handled it, the way you have publicly apologized being such a superstar, the way you have tried to make it up, the way you have tried not to repeat it is the message that like nobody is perfect. We all make mistakes in our life. Sir is a superstar. Sir is a big man. Sir is an MP. Sir has been good enough. Sir has been humble enough to apologize. And that's the lessons we learn in life. That is what is mental strength. To accept that, yes, we can make mistakes. To understand that we should not repeat it. We can improve. We can make amends. And that's what the whole thing is. The last question I'll ask you, and then we'll open it, please.
as a psychiatrist, when people tell that I'm depressed, I'm anxious, one of the best things I tell to them is get into sports. When I was at my lowest in my life, when I was depressed, when I was thinking of ending my life, at a moment in my life, I focused on sports. It's the moment I thought, no, it's the only thing that gives me pleasure. And even as a therapeutic tool, we talk of sports, and most of us here are minded by sports. So, Bhaji bhai, what do you think? Sports is a good thing to be recommended to all Oh, people yes. for mental health. And how does 100%. sports improve the mental health? Some of the 1 or 5 aspects that sports does to improve the mental health. 100%. Sports is the biggest medicine. You know, जब आप और ये इसको मेडिसिन कहो या ड्रग कहो या whatsoever, sports is the biggest drug. Get addicted to it. I'll say कि इससे बेहतर कोई नशा नहीं है. अगर जिसको ये नशा लगा उसको कोई और नशा करने की जरूरत नहीं पड़ती है. So sports करिए, चाहे वो हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, रनिंग हो, whatsoever. क्योंकि जब आप तो डॉक्टर्स हैं, आप भी बताएंगे कि अगर जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो ना, जब आप फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, वहां आपके जो मेंटल आप बात कर रहे हो, सिर्फ फोकस होता है कि यार मैंने कैसे हराना है ओपोनेंट्स को, या मैंने कैसे अपने आप में बेटर होना है. स्पोर्ट्स गिव यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस. यू नो, व्हेन यू आर प्लेइंग, यू नो, यू आर इन द कंपटीशन, यू आर एंजॉयिंग. आप भूल जाते हो कि आज मेरा यार नुकसान हो गया, वहां मेरा ये प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी यार, किसी ने वो कर लिया, वो किसी का कब्जा हो गया, किसी ने कब्जा कर लिया है, या फिर घर पे लड़ाई चल रही है. जब आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो ना, तो आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि बाकी की चीजें भूल जाते हो. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, और ये मेरा मानना है पर्सनली, कि स्पोर्ट्स इज द बेस्ट मेडिसिन. जिसको वो दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती है जो स्पोर्ट्स खेलता है. ग्रेट मिल्खा सर ने कहा था कि आज तक उन्होंने एक गोली खाई नहीं है, तो उनके लिए सबसे बड़ी मेडिसिन थी स्पोर्ट्स. जब उनका कहते थे कि सर दुखता है तो मैं भागने निकल जाता था, कुछ होता है वो भागते थे. स्पोर्ट्स इज द बिगेस्ट मेडिसिन. सो प्लीज एवरीवन, थोड़ा बहुत जरूर करिए, क्योंकि ये हम अपनी निजी जिंदगियों में इतने ज्यादा उलझ गए हैं, कारोबार में, ये सब चीजों में. बट health is your main health should be your main priority, and sports plays a big part to maintain your health, not just physically but mentally as well. So that's what I have learned over the years, that sport keeps me happy, sports keep me healthy. Sports is the way for me, you know, in life. To all of you who are listening, sir is meaning outdoor sports, not online gaming. We have a lot of addictions because of online gaming. That's what Bhaji bhai is telling. That is the advice. Last question that comes from the chat box. Then we'll open it up. How do you manage your family and child? The balance in a sportsman's life. Say again, sorry. How do you manage the family? That's it, because they are part of the whole, you know, your success story. They're the back room. So that's, you know, sometimes tough on the family. How do you manage it? How do you talk to your family? How do I talk to my family? कि हाँ, वो कुछ समय था जब मैं I was playing cricket and I wasn't doing well on the field. Then वो same mood मेरा जो है रिफ्लेक्ट करता था जब मैं अपनी फैमिली से बात करता था. अगर अच्छा दिन है तो अच्छा बात होगा, थोड़ा खराब दिन हुआ तो फिर थोड़ा वो चिड़चिड़ाहट रहती थी फोन पे, या फिर अगर सामने ही है तो उसमें. तो यू नो, आई बिलीव दैट जो काम, जैसे मैंने पहले कहा, जो आप काम जहां कर रहे हो उसको वहीं छोड़ दो. वो मैंने गलती एक लाइफ में ये करता था कि मैं मैदान पे तो जो मैच होता था वो मैं वापस भी लेके आ जाता था साथ में, रूम में या घर पे. तो उसके बारे में ओवर थिंक करके अपना वहां का एनवायरनमेंट तब खराब कर लेता था. क्योंकि मैं जो मैदान पे करके आया हूँ वो मैदान पे छोड़ के आना चाहिए. क्योंकि एक चीज एक टाइम पे स्पोर्ट्स कर रहा था, वो उस समय पे तो वहां छोड़ के आना चाहिए. इट इज वेरी important, but it is very difficult to leave it there and then. आप अगर ऑफिस में जाते हो तो आप वहां का काम अगर वहीं छोड़ के आए तो बेटर है. अगर वापस लेके आएंगे वो स्ट्रेस, तो वो आपका स्ट्रेस जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके बॉडी लैंग्वेज में. आप उसी तरीके से पेश आएंगे घर पे. तो वो घर वालों की उसमें कोई गलती नहीं है. इफ आई हैड अ बैड डे एट द ऑफिस और ऑन द फील्ड, उन्होंने क्या किया है? They still need that love, that care, that, you know, एक नॉर्मल चीज जो वो तो कुछ मांग नहीं रहे.
तो वो मैंने एक जो है वो गलती करी थी जिंदगी में कि यार वो मैं मैच को ना ले आता था अपने साथ, और फिर वो सोते हुए भी मुझे वो तंग करता था। फिर नींद नहीं आती तो अगले दिन आप फिर चिड़चिड़े उठते हो, फिर आप मैदान पे उतना अच्छा कर नहीं पाते जितना आपको चाहिए। सो भी बहुत लंबा एक कनेक्शन है जो आई थिंक समझने में बहुत समय लगता है, बट सीखें, धीरे धीरे सीखें। ग्रेट ग्रेट सर, लर्न टू डिसोशिएट। अपने प्रॉब्लम्स को घर में लेके मत आइए, घर का प्रॉब्लम्स को फील्ड पे मत लेके जाइए। बिल्कुल। That's how it is. And now we open it up for any discussions, anything. Ajay bhai, thank you, and sorry if I have dealt into any area where you were not No, comfortable not with. at all. But I not at I all. think you would have made a great psychiatrist. The way you have No, given no. advices, it's the way we give advices, and that's superb. Anything? वो कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे, तो ये आपका काम है, आपको ही साजेगा। हम तो क्रिकेटर बन नहीं पाएंगे, लेकिन आप साइकियाट्रिस्ट बन सकते हैं सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी क्रिकेटर बन सकते हो, पर पहले आपको सोचना जरूरी है कि मैं बन सकता हूँ। सही सर, सही एडवाइस। थैंक यू अमृत। पाजी ये प्लीज टेल मी, जो यंग क्रिकेटर्स हैं, जो जूनियर्स आ रहे हैं फील्ड में, नाउ सम ऑफ देम विल नॉट बी सेलेक्टेड, some of them will get rejected, some of them will get success. So वो अपना करियर पाथ कैसे प्लान करें इन कॉन्टेक्स्ट टू देयर मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य के हिसाब से कैसे करें वो? इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है ये। देखो, हर किसी को जो है वो क्रिकेटर बनना है, उसका सपना है। अगर किसी भी, मैं अगर जालंधर के शहर में जाता हूँ, यहाँ तकरीबन 250-300 बच्चे जो है शाम को प्रैक्टिस करने हैं। दे ऑल वांट टू बिकम सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली और कपिल पाजी। तो अगर उन सब में से निकलेगा शायद एक, या एक भी ना निकले। पर ये मेरे कुछ खास दोस्त थे जो जिनके साथ मैं आई यूज्ड टू हैंग आउट, की सबका सपना सेम था, और उसमें से मैं क्रिकेटर बन गया। मैं वो बन गया क्योंकि मेरे और उनमें शायद फर्क वही था कि जो जिद्दीपन था ना, वो मेरे में बहुत ज्यादा था। वो कि यार ये करना है, अचीव करना है और बन जाऊंगा, कोई रोक नहीं पाएगा। तो वो थोड़ा सा आना जरूरी है। और जो नहीं बनते हैं ना, उनके लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज है। देन अगर नहीं बनते हैं, पर आज भी जो मेरे साथ जो लड़के थे, वी ऑल वर्कड वेरी हार्ड, बट अपनी अपनी जगह पे जहां जहां है, वो भगवान ने उनको बड़ा सही तरीके से रखा है और अपने लाइफ में बहुत सेटल है। तो कहीं ना कहीं आप अगर क्रिकेट में कुछ नहीं बने, बट आपने मेहनत इतनी करी है, वो भगवान है, वो सब देखता है और वो फल कहीं और दे ही देता है। सो सम ऑफ देम दे आर डूइंग रियली वेल इन लाइफ, बेटर देन इन टर्म्स ऑफ मनी वाइज, या वो सब दे आर डूइंग बेटर देन मी। तो आई थिंक वहां कॉम्पनसेट हो गया है। तो निराश नहीं होना है, क्योंकि ये कुछ बनाना या कुछ कर जाना है, ये ऊपर वाले के हाथ में है। उसने चंद लोगों को जो है वो उस चीज से नवाजा है। तो आप निराश ना होइए, बट उसको सबका फिक्र है, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। कीप वर्किंग हार्ड, कीप मूविंग फॉरवर्ड, एंड डोंट वरी। आज नहीं तो कल जो है वो समय तो बदलता है, और बदलेगा, आपके लिए भी बदलेगा। सो बेसिकली कीप वर्किंग हार्ड एंड चूज योर गोल्स राइट। और अगर आप सक्सेस नहीं पा रहे हैं तो आर यू इन द राइट ट्रैक, इसको हमको रिवाइज करना चाहिए। रोशन, you want to ask something? Yeah, I would like to ask one question to Vaji. Vaji, what is the best pleasure you get in the achieving something in your zone of comfort, or unexpected achievement in your zone of discomfort? Just to give an example, 8-wicket haul in a test match, or hitting the fiery pace of Shoaib Akhtar for a 6. सर whatever, दोनों में अपनी अपनी एक वो है। अगर 8 विकेट जो है वो एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि 8 विकेट मिलना बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है। बट अगर आप टीम को जरूरत है, जब वो छक्का मारने की एक ही बॉल है, तो फिर वो उससे बेहतर चीज तो कोई नहीं हो सकती कि वो अपने जो टीम के लिए उस समय पर जो सबसे ज्यादा जरूरत थी वो आपने करके दिया। और वो अनएक्सपेक्टेड नहीं होता है, वो आप पहले, जैसे मैंने पहले बोला, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है। वो पहले आपको सोचना पड़ता है कि ये हो सकता है, ये मैं कर सकता हूँ, तभी वो चीजें होती हैं। अगर वो छक्का ऐसे नहीं लग गया कि फ्लूक था कि ऐसे मार दिया और बॉल निकल गई, वो शायद जीवन में एक बार होगा। क्योंकि अगर आपको वो चीज बार बार करनी है तो अपने आप को तैयार करना होगा, नॉट जस्ट स्किल वाइज, फिटनेस वाइज, बट मेंटली ऑल्सो।
क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि ये मैं कर सकता हूँ तभी चीजें होंगी, अगर आप सोचोगे यार नहीं ये होगा नहीं मेरे से, तो फिर तो कभी भी नहीं हो पाएगा। तो फर्क उतना ही रह जाता है, जो सोचते हैं मैं कर पाऊंगा वो कर जाते हैं, जो सोचते हैं कि नहीं यार ये कैसे होगा वो कभी कर नहीं पाते, वो सोचते ही रह जाते हैं। Special mental preparation required while you will playing against Pakistan? Yeah, you have to be kind of very focused and मैंने पहले भी बात करी थी कि sometime we keep taking our problem to the ground, और वो burden pressure of playing against Pakistan, वो रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचना कि रिजल्ट क्या होगा, तो हम फोकस हटा लेते हैं जो हमारा फोकस होना चाहिए खेलने पे, क्योंकि वो मेरी स्किल है। अगर उसको मैं फोकस करूंगा तो देन आई विल बी एबल टू परफॉर्म द बेस्ट एट माय स्किल। तो वो स्किल के ऊपर फोकस करना है एंड लीव दैट बैगेज साइड, काइंड ऑफ अ थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे उसको छोड़ के जाना है। सो प्रेशर तो होता है, हर गेम में होता है, नॉट जस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान। ऑफ कोर्स वो एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है तो बिल्डअप ज्यादा होता है, बट एज ए प्लेयर यू लर्न ओवर द इयर्स कि नहीं यार ये चीजें जो है शायद मुझे साथ लेके नहीं जानी। आई जस्ट नीड टू गो आउट देयर एंड डू व्हाट आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग rather than doing something extraordinary. You don't need to do extraordinary. Simple things works in life, but we don't do simple things. Thank you so much, Mr. Singh. पहले तो आपको कल गुरु नानक जयंती के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, सत श्री अकाल, and that is it. You took out so much of time. You took us across from your journey to us, shared some of the deepest problematic times, highs, lows with us, which has been a big inspiration to everyone. I'm sure the Psychiatry Association, taking cues from you, will actually build up the whole sports psychiatry department and that part much more. You are a figure which actually inspires a lot of these young students who are coming up today, who are and you rightly said that sports is an addiction that generation today should have it. And we would be really happy if your message of this can be taken across by the society to the masses, by you and by them, so that the more young generation join sports, work on their mental health with the help of the doctors, create, and we can see an India where sports is actually an addiction. Like Dr. Amrit said, not the indoor sports, but the outdoor sports. Outdoor sports, yes. We thank you so much for taking up your time, giving us our time, your time, sharing your views and agreeing to be the brand ambassador with the Indian Psychiatric Society to promote sports psychiatry. We really thank you a lot. I personally take this taking it from the society's perspective, thanking you on their behalf. Also, we would like to thank Ipca, who have been supporting across for this initiative and helping the society to take it further more ahead. So thank you so much. One line message for all the young generation who are looking at you. One line message for the doctors, how they can take it across from there. On the closing note, Visu. मैं तो सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सबका, जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप सबके साथ जुड़ के किसी की अगर मदद कर सकते हैं, तो I'll be more than happy to be part of you all and try to make everyone happy. और बाकी आप सबके लिए तो मैं ज्यादा क्या बोल सकता हूँ, सिर्फ शुक्रिया अदा ही कर सकता हूँ। और एक बड़ा अच्छा शेर सुनाया था उन्होंने, मैं भी शेर जो है वो वही बोल के खत्म कर देता हूँ। हिम्मत कर सब्र कर, हिम्मत कर सब्र कर, बिखर कर भी संवर जाएगा। हिम्मत कर सब्र कर, बिखर कर भी संवर जाएगा। यकीन कर शुक्र कर, वक्त ही तो है गुजर जाएगा। On this note, we would like to thank you and end this meeting. Vineet, we can go offline now. Thank you, Bhaji. Thank you. Thank you so much. We can